اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہم سٹوری دا انتھنکفل مین پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس کا آخری پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائریکٹلی یو ول لک ایٹ یور بک آن پیج نمبر 81. The queen fell unconscious. Her maid informed the king. The king called the doctors to cure her of the snake bite, but they could not cure her. The poison was fast spreading. The king grew sad. He made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. The announcement was made even in the prison. Raman offered to go and try to cure the queen. He was taken to the queen's chamber. He touched the queen's forehead. Immediately the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. Hearing this story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. "You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charges against an innocent man. This man had once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in jail," the king said to the goldsmith. Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold coins. "Go home and live happily," he said to him. Raman thanked the king and went home. He and his wife lived happily ever after. تو dear students، چونکہ جب رمن کوئی سنیک کے پاس چلا گیا تو سنیک کو جب رمن نے بلایا تو سنیک نے اس کو ایک آئیڈیا دیا۔ تو جب سنیک کوئین کے چیمبر میں چلی گئی تو وہاں اس نے کوئین کو ڈسا، تو کوئین جب بیمار ہو گئی تو کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ تو اس کے لیے جب بادشاہ جو تھا، ہر میڈز انفارمڈ دی کنگ، اس کی جو دایاں تھی انہوں نے بادشاہ کو انفارم کیا۔ تو کنگ نے بہت سارے ڈاکٹروں کو بلایا۔ جب ڈاکٹر لوگ آئے ملکہ کا علاج کرنے کے لیے تو کسی کا علاج صحیح ثابت نہیں ہوا۔ بلا آخر the king made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. اب بادشاہ نے ایک اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی میری ملکہ کا یعنی کوئین کا علاج کر سکے، ٹھیک کر سکے، تو اس کو میں ایک بہت بڑا انعام دے دوں گا۔ The announcement was made even in the prison. تو پیارے بچوں، یہ جو بادشاہ نے اعلان کر دیا تو یہ اناؤنسمنٹ اس جیل تک بھی پہنچی جس جیل میں رمن بند تھا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ رمن offered to go and try to cure the queen. اب رمن نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ملکہ کا علاج کر سکوں۔ He was taken to the queen's chamber. تو رمن کو کوئین کے چیمبر میں پہنچا دیا گیا۔ He touched the queen's forehead. اب اس نے کوئین کے ماتھے کو اپنا ہاتھ لگایا۔ Immediately the queen opened her eyes. جو ہی کوئین رمن نے اپنا ہاتھ ملکہ کے ماتھے پر رکھا تو اس ملکہ نے اس کوئین کی آنکھیں کھل گئی۔ She was cured of the snake's bite. تو اس طرح سے اس کے جسم میں جو سنیک کا جو پوائزن تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ The king was pleased with Raman. اب کنگ بہت خوش ہوا چونکہ بہت سارے ڈاکٹر آئے تھے، وہ بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ کو علاج کرنے میں ناکام ہوئے۔ اب جب رمن نے یہ کر کے دکھایا تو بادشاہ یہ رمن
रमन का ये देखकर खुश होता है. रमन से बादशाह बहुत खुश होता है. He asked him. रमन बादशाह रमन से कहता है, How did you land up in the prison? अब मुझे बताइए आप जेल में किस तरह से पहुंच गए. बादशाह ने रमन से कहा कि जेल में आप किस तरह से पहुंचे. रमन narrated to the king all that had happened to him. अब रमन ने पूरी दास्तान जो इसके साथ हुई थी, पूरा किस्सा बादशाह को सुना दिया, इंक्लूडिंग द goldsmith's ungratefulness. साथ साथ रमन ने इसको यानी गोल्ड स्मिथ, सुनार, उस आदमी की जिस आदमी को रमन ने कवे में से बचाया था, कवे में से निकाला था, इसकी इस एहसान फरामोशी को भी रमन ने बादशाह को सुना दिया. Hearing this story, the king got angry with the goldsmith. अब प्यारे बच्चों, रमन की ये दर्दनाक स्टोरी, रमन की ये दास्तान सुनकर बादशाह बहुत गुस्से में आता है. उसको इस गोल्डस्मिथ का गुस्सा आता है. He sent his guards to arrest the goldsmith. अब बादशाह अपने सिपाहों को हुक्म करता है कि इस गोल्डस्मिथ को अरेस्ट करके लाओ. You are a cruel and ungrateful person. अब जब गोल्डस्मिथ को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह उससे कहता है कि आप जो है, आप नाशुक्रा इंसान हैं, आप एहसान फरामोश इंसान हैं. You framed wrong charges against an innocent man. आपने इस मासूम इंसान के बारे में, यानी आपने इस मासूम इंसान के मुतलिक गलत कहा. This man had once saved your life. इस आदमी ने, यानी रमन के बारे में बादशाह उसे कहता है, इस आदमी ने एक दफा आपकी जिंदगी को बचाया, आपको नई जिंदगी दी. Instead of helping him, अब मदद करने के बजाय आपने you told a lie against him and got him arrested. आपने इसके मतलब मुझे झूठ कहा और इसको जेल में बंद करवाया. Now you will spend the rest of your life in jail. अब आपको जितनी भी जिंदगी आपकी है वो आपको जेल में गुजारनी पड़ेगी. The king said to the goldsmith. ये बातें किंग गोल्डस्मिथ को कहता है. Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold coins. इसके बाद बादशाह किंग रमन की ओर मुतवज्जा होता है और रमन को एक बहुत बड़ा गोल्ड कॉइन्स का एक बहुत बड़ा बैग उसके हवाले करता है और रमन से कहता है, गो होम एंड लिव हैप्पीली. अब जाओ अपने घर और आराम की जिंदगी बसर करो. He said to him. Raman thanked the king and went home. अब रमन बादशाह का शुक्रिया अदा करके अपने घर की ओर चला. इसके बाद he and his wife live happily ever after. इसके बाद उसकी बीवी और वो यानी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी. तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक नसीहत मिलती है कि जिंदगी में हमेशा इंसान को एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और जो कोई भी इंसान हम पे एहसान करे, कभी भी इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए. यानी हमेशा इंसान को इस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कभी भी हमें जिंदगी के किसी मोड़ पे भी जो हमारी मदद करेगा. इसका एहसान तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए. तो ये सब कुछ इस स्टोरी के बारे में था. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा. तो इंशाअल्लाह ताला टुमारो के क्लास में हम इसके टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करेंगे. आज दिन के लिए इतना काफ़ी है. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.